All right, so ladies and gentlemen, who we have with us are two feisty girls. We hear so much about smash patriarchy. These two girls actually did smash patriarchy and went on not just to contest the Miss Rishikesh pageant, but also to win it. Muskan Sharma, the last time you were seen, were telling off a gentleman on what really is Indian culture. You have been crowned as Miss Rishikesh. Muskan, welcome to the point. We have Pooja Gupta with us, second runner-up. Rishikesh, she was also one of the girls you saw in that video that went viral. Both of you, many congratulations. I would think there'll be so many of the other girls sitting there and they'll be saying, you go girls. What you did was fantastic. And it's amazing how you handle that kind of pressure, especially, you're so young. To tell somebody off on what really is Indian culture, and they're not standing there as the custodians of Indian culture to tell you what to wear and what not to wear. I think you won the pageant even before you won the crown and the sash, because just the way the both of you reacted. But Muskan, congratulations. First up, how happy are you feeling? Thank you. I'm so happy winning this crown and this title and this pageant. It was really a win-win situation for me. And I'm really happy that now every woman know that they have to take stand for themselves. Muskan, tell me what happened. There was one video, and Pooja, I'm going to get you in also. Let's start with Muskan. There was one video, and Muskan, you can be seen arguing with this gentleman. I'll give our viewers a little bit of context because they saw the setup story. This gentleman is one of the presidents of the many self-claimed Hindu groups, and he barged into the rehearsal of Miss Rishikesh, and he was telling the girls that they shouldn't be wearing certain clothes which go against Indian culture. The girl in the black is Muskan, and that video has gone viral ever since, and now Muskan has won the pageant. But Muskan, what happened on that day? Can you tell us? What exactly happened when you were rehearsing? Yes, so we were rehearsing. We are on the break. We all were sitting, practicing our interview round. And the gentleman stepped in and said, now the pageant is over, you may all leave. So my question was, why? So the guy said to me, because this is not the culture we are showing. Look at your clothes. Now you have to step out. He told The you कि आप pageant अपने is... कपड़े देखिए कि आप क्या पहन के आई हैं. That's what he told you. Yes. This is not the culture we are seeing, and this is not the Uttarakhand culture, and the pageant will not happen now. Now you have to step out. That's what he said. And what did you say, Pooja? For those who haven't seen the video, though we've aired it. थैंक यू बट मेरा रिएक्शन भी सेम ही था, क्योंकि हमारे कपड़ों से जजमेंट नहीं होता, एंड वो सीधा एंटर करते हैं एंड देन शाउटेड कि सब खत्म है एंड जाइए. तो वी बोथ आर स्टार्टिंग आर्गुमेंट विथ हिम. तो आप दोनों क्योंकि आप दोनों दिख रहे हो उस वीडियो में, तो पूजा आप लोगों ने क्या बोला? So my first reaction was, sir, you can't break someone's passion and dream like this. Because jitni bhi ladkiyan wahan pe baiti thi, they all had a, this mindset. They want to win a title of Miss Rishikesh, win a pageant, and start their career. पूजा, आपने क्या बोला? आपकी क्या थिंकिंग थी तब? मेरी थिंकिंग यही थी कि आप कपड़ों पे आके जजमेंट दे रहे हैं, और सोसाइटी में काफ़ी ऐसे गलत काम होते हैं, लाइक खुलेआम अल्कोहल बिक रहा है. इन सब चीज़ों के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लड़कियों को आके क्यों हम ब्लेम कर रहे हैं? पहले उन सारी चीज़ों को रोकिए. मुस्कान, एंड देन दैट जेंटलमैन लेफ्ट द बिल्डिंग. वो बिल्डिंग से चले गए. जो आपको दिख रहे हैं वहाँ पे होटल के मालिक, he asked him to step out. So he stepped out, and I don't know what happened afterwards because we were inside the ये room. वीडियो कौन ले रहा था? I think there was some news reporter and some people were there. There was some conference going on in the same hotel. अच्छा. And फिर ये वीडियो वायरल होता है, पर आपका जो pageant है, it takes place as it is. You rehearse, you wear the clothes you want to wear, और आपका pageant ऐसे कैसे हुआ? Is that true? Yes. मुस्कान, the kind of, क्योंकि एक mindset होता है especially in small towns that you shouldn't wear certain kind of clothes, लड़कियों को बाहर देर नहीं जाना चाहिए. तो ये एक true test था
of you girls who actually stood up against that kind of pressure. पर मुस्कान थोड़ा बताइए, how much is there is pressure as girls, young girls, you must be feeling it in in Rishikesh or in मतलब दिल्ली में भी होता है, ऋषिकेश तो इससे भी छोटा शहर है. यस एक्चुअली हम यूजुअली गर्ल्स को यही सिखाते हैं कि आप प्लीज चुप रहो, आप बीच में मत बोलो अगर बड़े बात कर रहे हैं. आप इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हो, आप जल्दी से घर चले जाओ, या आपने क्या पहना है. सो आई थिंक यू आर नो वन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन इफ माई पेरेंट्स आर अलाउइंग मी दिस. पूजा, have you felt the same pressure? thing. हाँ, बताओ. अकॉर्डिंग टू मी कि हमारे कपड़े हैं और हम अपनी पसंद से पहन रहे हैं, और मैं लड़कियों को भी यही सिखाती हूँ कि गलत के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, हमेशा अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए. इनफैक्ट माय मदर ऑल्सो सेइंग कि बेटा कभी भी गलत के आगे मत झुकना. तो आई एम ऑलवेज राइट कि गलत के आगे नहीं झुकना, और उस दिन भी वो गलत थे तो हमने उसके लिए आवाज़ उठाई. मुस्कान, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था? यस, इवन माई मॉम सॉ द वीडियो. क्या बोला आपकी मम्मी ने? कि एक तो मुस्कान आप वायरल हो गए हो, पर क्या बोला आपकी मम्मी ने? My mom said, firstly I went home and then I said to my mom, you know what, I had a fight today and this happened. So my mom firstly was angry that why did you spoke to a guy who is like a uncle to you, a big guy, जिससे आप बात कर रहे हो, आपने कैसे बात करी? तो मैंने बोला no, I didn't said anything wrong and he was commenting on my clothes. So my mom said, okay, then it is right. Then it is right. Yeah, because he's no one. He's not the one who got me those clothes. He's no one telling me what should I wear. पूजा, जब वीडियो देखा आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने, क्या रिएक्शन था? फर्स्ट टाइम तो मम्मा बहुत शॉक कि बेटा ऐसे लोगों से, नेता वगैरह से पंगा नहीं लेते. बट मैंने उनको जब पूरी सिचुएशंस बताई तो शी इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग मी कि तुमने अच्छा किया, और ऐसे ही जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को. मुस्कान, जब ये वीडियो वायरल हुआ, आपको पता है ना कितना वायरल हो गया ये वीडियो? जब ये वायरल I हुआ, know. लोगों ने फोन तो किया होगा आपको, कैसे got a lot रिएक्शंस of मिल रहे थे? calls. मुझे बहुत सारे calls आए, even my family, my friends, and I got a lot of news reporters calls, and there was a time when I was fed up because I have to speak a lot of people ki हाँ, बहुत बात करनी giving them the पड़ती same होगी. scenario again and again, and then there was a point that I silenced my phone and I slept off for a moment so I can relax my mind. And focus on the pageant. Yes, I focused in on it. That's what, and that's how you won it, which is amazing. But Pooja, lots of reactions, बहुत reactions आए होंगे, लोगों ने फोन किया होगा, मोस्टली तो बोला होगा वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया काम किया. हाँ, काफ़ी सारे रिएक्शंस थे, कुछ सपोर्ट भी मिला, कुछ लोगों ने बोला भी कि नहीं तुमने गलत किया. बट आफ्टर दिस उस टाइम पे मेरा फोकस मेन था कि मेरे को मेरा पेजेंट्री पे फोकस करना है, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट वो है. देन मैंने उस दिन तो कुछ भी कॉल पिक्स नहीं करे, अदरवाइज उसके बाद तो बहुत कॉल मैसेजेस आए, और काफ़ी लेडीज़ ने मुझे सपोर्ट किया कि बेटा तुमने सही जवाब दिया. दैट्स वाई आई एम वेरी हैप्पी कि लेडीज़ मुझे सपोर्ट कर रही थी, जो हमारी गर्ल्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रही थी. हमारी जनरेशन इस चीज़ को समझती है. पूजा, अगर आप लोग, क्योंकि अभी आप देखो एग्जाम्पल बन गए हो स्पेशली, और मैं बार बार बोलना चाहूँगी क्योंकि जो स्मॉल टाउन प्रेशर होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है, क्योंकि उसमें आपको कॉन्स्टेंटली पुल डाउन, क्योंकि इतने छोटा सोसाइटी होती है, इतनी छोटी आपकी मतलब जिनसे आप मिलते हो, इट्स सच अ क्लोज निट पीपल एंड द सिटी, के बहुत प्रेशर हो सकता है. अगर आपको somebody sitting in ऋषिकेश या कहीं पर भी आप जैसी लड़कियों को कोई मैसेज देना हो, आप क्या बोलोगे? पूजा, गो फर्स्ट एंड देन आई विल गो टू मुस्कान. मेरा तो यही होगा, अपना कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा हाई रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंट कभी भी कम मत होने देना, और अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ना, कभी भी किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है. मुस्कान? So I would like to say to all of the ladies, not even ladies, to everyone, a guy or a kid, if you are right somewhere, please fight for your rights, because no one else will step in and fight for you until or unless you want to fight for yourself. पूजा, So first, राइट. पूजा, व्हाट इज द नेक्स्ट, अगला आउटफिट क्या पहनना है?
Ma'am, I was literally loved it, the short dresses and all. And next, Next is I'm just a wearing my short dress. you're And wearing your short dress. yeah, and backless gown and all. Well done. It'll look beautiful, I'm sure. Muskan, what's the next outfit? So it depends on the situation and the place. If I'm going temple, I'm gonna wear suit and salwar. If I'm going somewhere Of course. party, I'm gonna wear party dress. You're going to wear a party dress. And career-wise, what's the next move, Pooja? Agla, what is the next thing? I'll go for Miss Uttarakhand and then Miss Stamina Uttarakhand and also Miss India also. Muskan? Now you are about to see me winning a lot of pageants. I wish both of you all the best and thank you for doing what you did because, you know, it always serves as an example. And a lot of young girls who'd be watching and sometimes don't say anything back when they, you know, when they are faced with a similar situation, will hopefully take a small cue and a small, you know, leaf from your book. But thank you, both of you, for joining us. More power to you. Thank you.